Assalamu alaikum students, welcome to your class of biology, and today we are starting from the chapter number 1, Introduction to Biology. It is a very basic and a very easy chapter, and I hope when we will start reading and discussing on this chapter, I will be able to guide you and to help you in understanding this chapter. And in order to make it easier for you, let me tell you it's a very easy chapter, so no need to get worried. Some students might be reading biology for the very first time. It might be a newer concept, newer terminologies for you, but believe me, you are going to get the idea and you are going to understand it, and most importantly, you are going to remember it, inshallah. So, let us begin with our today's topic. Biology is the scientific study of life. The word biology itself has been derived from the two words bio, which means life, and logo means study. So biology means to study about life. And when we talk about the life, it means we are going to study and we are going to read about all the kind of the living organisms. They include plants, it includes animals, microorganisms, each and every form of the life that we study about comes under the heading of the biology. Now the question is, why is it important to study the living organisms and to life? The answer is, first of all, in order to understand our body, अपनी ही बॉडी के सिस्टम को समझने के लिए we need to study the living organisms and then to solve many of our problem regarding our health, our environment, regarding the medicines, we need to study the biology. There are the divisions and the branches of biology. The three main divisions or three main branches of biology are zoology. Zoo mean animals and logy means study. So zoology is the study of animals. Botany means study of plants. In botany we read about plants. And then microbiology. Micro mean very small and biology mean study of life. So in microbiology we read about the microorganisms. Microorganisms are those organisms that are tiny and we cannot see them with the naked eye. We need microscope to see them. So studying the microorganisms is called microbiology. And then these three divisions, they are further divided into different branches. Let's start reading them one by one. Morphology का मतलब होता है outer structure पढ़ना. For example, let us take the example of a frog. In morphology we will read the color of the frog, we will notice its size, we will notice its weight, we will read about its skin, अबाउट ऑल द ऑर्गन्स जो उसके बाहर से ही नज़र आ रहे हैं, उसके लिम्स के बारे में. सो इन मॉर्फोलॉजी वी रीड अबाउट और वी स्टडी द फॉर्म एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. Molecular biology deals with the study of molecules of life. Molecules of life mean water, protein, carbohydrate, lipid and nucleic acid. These are the molecules that are required to sustain the life, and we read them in molecular biology. Anatomy का मतलब होता है internal structure. Morphology का मतलब outer structure and anatomy का मतलब internal structure. Histology mean to read the different tissues in your body. There are multiple tissues in your body. For example, the tissue of your heart, the tissue of your muscles, the tissue of your blood, the tissue of your bones. So studying the tissues is called histology. You will have to remember it by heart. आपको ये याद करनी पड़ेंगी. Cell biology, as the name is indicating it, we study about the cell, about the parts of the cell. In the cell biology we study about how the cell works, about the different processes that happens in the cell. Organelles का मतलब होता है the smaller parts of the cell, they are called organelles. Physiology, the branch deals with the study of function of the different parts of living organism. Physiology, फिज़िकल वर्ड से है, नज़र आने वाली चीज़ें. फिजियोलॉजी
जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उनको पढ़ना। नज़र आने वाले जो डिफरेंट पार्ट जो आपको बाहर से नज़र आ जाते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म को कट किए बगैर ही आपको नज़र आ रहे हैं, दे आर कवर्ड इन द फिजियोलॉजी। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का मतलब होता है द थिंग दैट वी इनहेरिट फ्रॉम आवर पेरेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, our parents have the black hair, so we have the black hair. Similarly, many of our habits, they resemble with the habits of our parents. Why? Because we have inherited from them, and we read about the inheritance in the branch of the biology which is called genetics. Inheritance means transmission of character. Character mean कोई भी quality, उसको ट्रांसमिट होना पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मीन बेबीज़ के अंदर। एम्ब्रियोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू अ न्यू इंडिविजुअल। एम्ब्रियो की स्टडी, एम्ब्रियो इज़ फॉर्म्ड बिफोर अ न्यू इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल, इन अ सीड, अभी वो सीड आपने सो नहीं किया, उसमें से पौधा नहीं निकला, उसके अंदर एक स्मॉल एम्ब्रियो मौजूद है, बेबी प्लांट जिसको कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द एम्ब्रियो। सो स्टडिंग अबाउट और रीडिंग अबाउट द एम्ब्रियो इज़ कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। Taxonomy. Taxonomy means classification of organisms. Classification means dividing organisms into groups and subgroups. In order to understand clearly, in science we divide the living organisms. For example, एक जैसे जितने भी living organism हैं, जितने भी उड़ने वाले for example living organisms हैं, उनको एक ग्रुप में रख दिया। जितने भी तैरने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या जो पानी के अंदर रहते हैं वो एक ग्रुप में आ गए। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़मीन पे रेंगने वाले हैं उनको आपने एक ग्रुप में रख दिया। सो वी ऑलवेज मेक द ग्रुप्स इन द बायोलॉजी, और वो ग्रुप्स बनाना और उन ग्रुप्स को स्टडी करना इज़ कॉल्ड टैक्सोनॉमी। देन पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फॉसिल। फॉसिल कहते हैं ऐसे जानवरों या पौधों की ढांचे और उनकी बाक़ियात को जो कि एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब कि वो मज़ीद अब इस दुनिया में उनकी तरह का कोई जानवर नहीं मिलता। फॉर एग्ज़ाम्पल डायनासोर, दुनिया में एक भी डायनासोर मौजूद नहीं है अभी, उसके हमारे पास द स्केलेटन्स आर अवेलेबल एंड दे आर कॉल्ड फॉसिल। सो स्टडी ऑफ द फॉसिल इज़ कॉल्ड पैलेंटोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी, एज द नेम इज़ टेलिंग अस, study of interaction when a living organisms they are living together. Let us take the example of the forest. In forest, all the plants and animals they are living together and they are interacting with each other. For example, plants make oxygen and animals use it for breathing. Similarly, animals eat plants. In this way, all the living organisms they interact with each other. When we read about or when we study about the interaction of different living organisms, it is called environmental biology. Sociobiology. Socio means social. Different living organisms, different plants, different animals का social behavior, when we study it, when we read about it, it is called the sociobiology. Parasites are the organisms that take food and shelter from the living host and in return harm them. For example, mosquito. Mosquito suck the blood from your body and in return it gives you different kind of diseases, for example malaria and dengue fever. So the living organisms that take food from the other living thing and then harm them in return, सिर्फ फूड नहीं ले रहे बल्कि वो हार्म भी कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट बोला जाता है। कुछ प्लांट्स भी पैरासाइट होते हैं, एनिमल्स भी पैरासाइट होते हैं। तो जो पैरासाइट्स की स्टडी होती है दैट इज़ कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। Biotechnology deals with the practical application of living organisms to make substances for the welfare of mankind. Immunology. Immunology mean immune system को study करना। There is a system in our body, in the body of all the living things that protect them against diseases. जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस होता है और वो कंप्यूटर में आने वाले वायरसेस को स्टॉप करता है, in the similar way there is a system in our body. It is called immune system. It kills all the germs and prevent us from diseases. So studying the immune system is called the immunology. Entomology, insects की study को we call entomology. Pharmacology, pharma mean drugs and cology means study. In pharmacology we read about the drugs, about the medicines and how do they affect our body. Human population growth
इन्फेक्शियस डिजीज़, एडिक्टिव ड्रग्स एंड पॉपुलेशन आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज़ टुडे। और आजकल ज़्यादा इश्यूज़ में बीमारियाँ, ड्रग्स, पोल्यूशन और ह्यूमन पॉपुलेशन ज़्यादा ऐसे पॉपुलर टॉपिक्स हैं जो कि बायोलॉजिस्ट जिनके बारे में पढ़ना पसंद करते हैं।